Welcome to the project manager test number 3 आंसर डिस्कशन सेशन। क्लास को शुरू करने के पहले कुछ बातें हम शेयर करना चाहेंगे। दैट इज दिस इज द प्रोजेक्ट मैनेजर टेस्ट नंबर 3, राइट। सो इन द टेस्ट नंबर 3 द पेपर की स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लेते हैं। दैट द पेपर, ये आपके टोटल 300 मार्क्स का पेपर हुआ एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस द 2 hours. The question paper is divided into the primarily these three sections: the section A, section B, and section C. The section A carry the 20 marks questions, जिसमें से you have to solve the 5 out of the 7 questions. Then there are this section B 40 marks, and then section C there are 60 marks. 60 marks मतलब 3 mark के questions ये इसमें पूछे गए थे। दिस पेपर वॉज बोथ इन द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों ही बच्चों के लिए ये सेट किया जाता है। एंड हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज का पार्ट है ये। इसमें आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, अटेम्प्ट योर आंसर, दैट इज कॉल्ड वर्ड लिमिट। 10 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखने हैं आंसर्स। 20 मार्क्स के लिए 250 to 300 एंड 40 मार्क्स के लिए जो रिस्पेक्टिवली 500 to 600 वर्ड्स में आपको लिखना है। Now these are the basic the guidelines. Now इस क्वेश्चंस पेपर में जो टेस्ट पेपर है एज पर द सिलेबस, दिस जेपीएससी प्रोजेक्ट नंबर टेस्ट 3 में इसमें टॉपिक कवर्ड थे कि दैट इज प्रोसेस ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 विद कॉन्सिक्वेंशियल रूल्स, एंड राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशंस, rehabilitations and the resettlement act 20 and 2013, right? This is very important act as far as your this industrial project manager is concerned, right? So in topic से questions पूछा गया था. Let me go into the questions and accordingly I will take one by one. So in this part, first part we will cover few questions, in the second part we will cover a few questions. In this way we will cover the entire all the questions, right? So ये क्वेश्चंस हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स है ऑलरेडी। सो क्वेश्चन पेपर्स से आप इसको करेक्ट करेंगे। डायरेक्टली गो टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी टुडे वी विल डिस्कस। उसके बाद हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन ए को कवर करेंगे। नाउ सेक्शन सी की बात करेंगे। द मार्क्स आर इंडिकेटेड हियर, ऑल यू हैव टू सॉल्व इट। देयर आर कॉल्ड 5 क्वेश्चंस इन टोटल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। Second, what are the key differences between the stakeholder-centric and the shareholder-centric models of the corporate governance? Strike a balance between land bank concept, land acquisitions, and industrial development in the state of the Jharkhand. Briefly discuss how the tenancy laws like CNT and SPT Act play a critical balance between the industrial growth and the preservation of the tribal cultural identity. ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स से आपसे थे। And the question number 5, it is of the 20 marks. You have to write a short notes on the following topic in 200 words. Topic is land acquisitions process lead to the loss of civilizations. You have to connect it कि किस तरीके से जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं that is called the land acquisition process है, वो ultimately the tribal loss, culture, civilizations के losses हैं. You have to write a short notes while connecting these two aspects. ठीक? So एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और लेट मी शेयर विथ यू कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था एंड आपके आंसर्स किस लाइन पे होने चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग विद दिस द नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एसे के क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस एसे क्वेश्चन, तो एसे की यदि मैं बात करूं, सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस एसे? You have to balance between this land acquisition process and the second part, this is called loss of the civilizations. You have to connect between these two aspects, right? So आपको पता है that for any industrial purpose land acquisitions it is an important concept because the बिना land bank का कोई भी infrastructure project या फिर कोई developmental project it cannot be conceived, ये feasible नहीं है। But at the end you have to what we are witnessing, ultimately there is a loss of culture, civilization in the state like specifically like झारखंड, है ना, हमारे जैसे स्टेट्स में। सो यहाँ पर किस तरीके से बैलेंस अप्रोच होना चाहिए? क्या एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या फिर देयर शैल बी बैलेंस बिटवीन दीज टू? सो दिस इज ए टाइपिकल मॉडल आंसर, आप इसको देख सकते हैं बट यू कैन राइट अ बेटर आंसर, है ना। लैंड एक्विजिशंस दाउ एसेंशियल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट एंड
डेवलपमेंट के लिए लैंड जो इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट है, ऑफन रिजल्ट्स इन द प्रोफाउंड सोशियो कल्चरल डिसरप्शंस। क्यों? क्योंकि लैंड इज नॉट ओनली ए पीस ऑफ लैंड बट इट इज ए मीन्स ऑफ द लिवलीहुड। The land is what linked with your identity. So thereby, that is not just a piece and parcel of the land. It is linked with the identity, livelihood, asylum. So जब भी land acquisitions unfair हो, so इसका ultimate impact आप socio-cultural disruptions में देख सकते हैं. When the communities, particularly the tribals and the rural populations, are displaced, so the process doesn't merely involve loss of property but also their entire ways of life। क्यों ना? उससे उस जमीन से उसके लिवलीहुड, उनके एस्पिरेशंस, उनकी आइडेंटिटी सब जुड़ी रहती है। सो आप देखोगे कि जो ट्राइबल एरियाज हैं और इवन द रूरल पॉपुलेशंस हैं, तो इनके चलते उनका ग्रेट वॉक ऑफ द लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। सो लैंड इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इट embodies cultural and social networks, historical continuity। Got it? So, एक hand में you have to highlight a significance of this, the importance of the land, but on the other hand, this displacement severs the people from their ancestral lands, forest, water resource अलग करता है, undermining the traditional livelihood such as the farming, fishing, and that the forest produce collection। So more critically, it dismantles the community structure, है ना? कि that is called it ultimately loss of life, loss of livelihood, identity। So it dismantle these community structures, rituals, and collective memory। इसका loss है। This is the important line। Okay, now leading to the gradual loss of civilizations rooted in those spaces। When I say the civilization, civilization means the materialistic part of the culture। This is called civilizations। Now, materialistic part refers to जैसे कि for a tribal communities. So, tribal communities, the forest is not only an asylum, it is a source of livelihood, major forest produce, minor forest produce. It provides various type of the eco services, right? So, thereby, it is basically hallmark of civilizations. So, thereby, loss of land is actually the loss of civilizations। Tribal groups, for instance, face cultural disintegration when relocated to the urban or unfamiliar environments where their custom and practices cannot be sustained। तो जब आप दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर करते हैं, उनको जाते हैं, तो मेन स्ट्रीमिंग में दिक्कत होगी, उनके साथ नई कल्चर के साथ सिमुलेशन में दिक्कत होगी, एडेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो देयर बाय देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ सिविलाइजेशंस होता है थ्रू दिस द अनफेयर मीन्स ऑफ लैंड एक्विजिशंस। The acquisition process is poorly managed. It reduces the vibrant communities into the marginalized groups। Obviously, that is called every community की prosperity, vibrancy, उसके identity, उसके livelihood से derive होती है। सो इस तरीके से इफ इट इज पुअरली मैनेज तो अल्टीमेटली देयर इज लॉस, है ना? सो विद द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एलिनेशंस, ये सारी समस्याएं इसके साथ उत्पन्न होती है। कंपनसेशन इन मॉनेटरी टर्म्स cannot replace the centuries of the cultural heritage of the social cohesions। How could you say कि just a monetary value उसके कंप्लीट लॉस को कॉम्पेंसेट कर सकता है? So today that's why that is called this Land Acquisition Act of the 2013। इसके 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करेंगे। सो इट प्रोवाइड्स द प्रोविजंस लाइक द सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। नाउ व्हाट इज दिस सोशल इंपैक्ट असेसमेंट? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट इज प्राइमरीली, जैसे आप बात करोगे कि देयर इज लॉस ऑफ फॉरेस्ट, तो क्या सिर्फ लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल लॉस है? नो, इट इज द रिलेटिंग टू द कल्चरल लॉस, it is relating to the social loss, it is relating to the economic loss। So this collectively, this is social impact assessment is socio cultural economic loss को assess करता है। so thereby यहाँ पर क्या क्वेश्चन का डिमांड है कि how there is called trade off। so this is called जो monetary compensation benefits हैं, it not only the economic aspect, it is not going to take up all the social cohesions। unchecked acquisitions risk that erasing the civilizations that have thrived in harmony with the nature for the generation। जो सदियों से, सालों से इस जमीन पे रहे हैं, उनको जस्ट एक मॉनेटरी बेनिफिट सबको कैसे कंपेंसेट या फिर हार्मोनी को कैसे थ्राइव कर सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस, पॉलिसीज मस्ट प्रायोरिटाइज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, participatory decision making, culturally sensitive rehabilitations, ensuring development doesn't come at the cost of the civilization loss। ठीक है? So this is the topic। You have to write a short notes in around the 200 and 250 words। So land acquisition process lead to the loss of civilization, you have to justify, है ना?
सो ये कुछ ऐसे नेचर का आपका आंसर्स बनता है इसका। तो पॉसिबली वन ऑफ द टाइपिकल आंसर इज दिस। आप इसको देखते हुए इतना तो जरूर लिखें, इससे बेहतर भी आप लिखने की कोशिश करेंगे। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 4? They briefly discuss how tenancy laws like the CNT and SPT Act play a critical balance between industrial growth and the preservation of the tribal cultural identity. ये क्वेश्चन हमारी स्टेट लाइक द झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट फॉर द स्टेट लाइक द झारखंड, जहाँ पर आपके पास एक दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड है, दैट इज कॉल्ड मिनरल रिजर्वेयर्स है, द छोटानागपुर प्लेटूज हैं, उन एरियाज में एक हैंड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द नेसेसिटी। बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ का द वाइब्रेंसी ऑफ द स्टेट इज नॉट रियलाइजेबल। बट ऑन द अदर हैंड कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट? क्या एट द कॉस्ट ऑफ द ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी का लॉस, या फिर उनको प्रिजर्व करते हुए जो बढ़ेंगे, दैट इज अल्टीमेटली ए सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रोसेस में ये जो टेनेंसी लॉज हैं, स्पेसिफिकली सीएनटी एसपीटी, एक बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस या रोल प्ले करता है। यू हैव टू हाईलाइट दिस एंड यू हैव टू डिस्कस ब्रीफली। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको सीएनटी एसपीटी के बारे में जानना होगा कि दीज आर द टेनेंसी लॉज। सीएनटी एक्ट व्हेन इट वाज फॉर्म्ड 1908 में, एंड देन एसपीटी एक्ट दैट इज कॉल्ड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट दैट इज 1949। So these are the two effective piece of the legislation जिसको टेनेंसी लॉज भी बोलेंगे, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड को नॉन ट्राइबल में ट्रांसफर होने से, एलिनेट होने से प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। गॉट इट? सो दिस सीएनटी एक्ट 1908 and एसपीटी एक्ट ऑफ 1949 enacted to protect the tribal communities in the Jharkhand from alienations of their land, right? कि that is called, जब आप देखोगे ब्रिटिश एरा में या फिर झारखंड मूवमेंट की यदि बात करोगे, तो झारखंड मूवमेंट के टाइम में यू विल फाइंड कि देयर आर मेनी चैलेंजेस टू द स्टेट ऑफ दिस, लेट्स से छोटा नागपुर, उसमें छोटा नागपुर कहा जाता था, ठीक है, लाइक द वेरियस टाइम में इसको खुखरा प्रदेश, तो इस तरीके से नाम से जाना गया है। सो देयर बाय द आउटसाइडर्स, जिसको हम लोग बोल सकते थे दिखू, ठीक है, सो आउटसाइडर्स वर कॉल्ड द दिखूस, द प्रॉब्लम्स ऑफ द दिखू, जो आते थे यहाँ पर रह जाते थे, एंड दैट इज कॉल्ड जो नेटिव पीपल्स के पास लैंड का एलिनेशंस, मॉर्गेजेबल लैंड। When let's say in the 1798 में permanent settlement was introduced, the zamindars become a third class of the rulers, then money lenders problems in some part of the state. So this way जो land owners हुआ करते थे जमीन के, वो धीरे धीरे क्या होते चले गए ना, वो जमीन एलिनेट होते चले गए। इसको बचाने के लिए there were tenancy laws। आई बस समझ में? तो tenancy laws you have to understand nicely for the झारखंड examinations। अब देखते हैं कि ये टेनेंसी लॉ कैसे इन लॉ को प्रोटेक्ट करता है, दिन ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करता है। द लॉज restrict the transfer of the tribal land to the non-tribals, thereby safeguarding traditional right, livelihood and the cultural identity. When I say the Jharkhand, तो यहाँ पर identity किससे derive होती है? झारखंड मतलब the land of the forest. Thereby, the forest is not only simply a economic asset or tool, anything else, but it is a life. The forest livelihood, it is an identity. So thereby you have to protect it, preserve it. इसके साथ साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। Now दूसरे हैंड में this our state is also bestowed with the cultural wealth। हमको पता है छोटानागपुर का प्लेटो, जिसको रूर ऑफ द झारखंड, द मिनरल डाइवर्सिटी, मिनरल रिचनेस है। Now the state also has the industrial potential। इन दोनों के लिए लैंड भी चाहिए हमको फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। बस समझ में? So thereby, this act create a critical balance while they prevent the indiscriminate acquisitions that could erode the tribal heritage. They also allow the land use for public purpose under the regulated conditions. When you study the CNT Act and SPT Act, then there are several provisions कि रेस्ट्रिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन द 46 ऑफ द सीएनटी एक्ट, ये फिर किसकी बात करेगा? दैट इज कॉल्ड ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द लैंड। इट विल रेस्ट्रिक्ट इट, बट इट आल्सो इनेबल इट कि फॉर व्हाट पर्पस कब लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है, लाइक द पब्लिक पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, माइनिंग पर्पस के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। सो देयर बाय ये इंजुडिशियस एक्विजिशंस की बात नहीं करता है, ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्विजिशंस की बात नहीं करता है। रादर ये क्या बात करेगा कि इन पॉजिटिव वे में इट वन हैंड में डिसेबल भी करता है, बट ऑन द अनदर हैंड इट इनेबल करता है, बिकॉज विदाउट द यूज ऑफ द लैंड हाउ द इन्वेस्टमेंट एंड हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स टू बी अचीव्ड। आई समझ में? अब आगे देखेंगे।
The CNT and SPT act as a great rails and that ensuring industrial growth doesn't come at the cost of tribal displacement, cultural erosion and that exploitations. Exploitation के कॉस्ट पे डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होना चाहिए. इसके लिए ये जो ग्रेटर टीथ का काम कौन करता है? टेनेंसी लॉ, like CNT and SPT Act. The challenges lies in the harmonizing the developmental needs with the social justice, making these tenancy laws vital for sustainable industrialization in the Jharkhand. झारखंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइल्यूशन ऑफ द लॉज लीड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट you should know that the laws are for not for restrictions only but also for enabling creating the good conditions for the development. Tenancy laws के बारे में आपको इन बातों को डिस्कस करना था. Here you have to critically balance इसको justify करना था between the industrial growth and preservation of tribal cultural identity. ठीक है, मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं था. You have to briefly discuss and nicely end it. Now come to the question number 3. Strike a balance between land bank concept, land acquisitions act, industrial development in the state of Jharkhand. लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है. देयर को लैंड बैंक, लैंड इज ए नेसेसिटी, प्रीकंडीशंस है. सेकंड, लैंड एक्विजिशंस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस शुड बी फेयर, जस्ट. एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इट इज द नीड, ये तो करना ही करेगा. सो देयर बाय यू हैव टू राइट इट कि इसके बीच में, तीनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. The state of the Jharkhand, rich in the mineral and the natural resources, has the promoted land bank concept. भारत में एक रिसोर्स पूल ऑफ द लैंड होना चाहिए जो सरकार के अंदर हो. आपके आने वाले समय में उस पर इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें शुरू किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंड बैंक, make land readily available for the industrial projects, because without industry you cannot expect the development to any of the particular area. So thereby, but the industry come where the profit should be there, and for that infrastructure is needed, projects should be needed, that requires investment. So इसके लिए लैंड तो चाहिए, उसके बगैर आपके पास मिनरल रिचनेस होने के बावजूद भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे. Now this facilitate investment and accelerate industrial development. धीरे धीरे ये आगे चलेगा, एक्सपीडाइट करेगा. आपको समझ में आ रहा है. However, large scale acquisitions often lead to the displacement of the tribal and the rural communities. लेकिन कभी कभी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज, नॉन ट्राइबल पीपल्स, रूरल कम्युनिटी डिस्प्लेस हो जाते हैं. कंसर्न्स फॉर द लिवलीहुड लॉस एंड कल्चरल इरोजन. इस तरीके से जो लॉसेस इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ लॉस ऑफ लैंड नहीं है, rather it is entire the loss that include livelihood losses, that includes the cultural losses, civilizational losses. तो ये इसको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा. लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लाया गया तो इसका नाम रखा गया कि राइट टू फेयर लैंड एक्विजिशन फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. सो thereby it basically talks about the fair compensations, it talks about the consent clauses and it talks about rehabilitation measures. ये तीनों ही इसके मेन कंपोनेंट्स थे कि ये फेयर कॉम्पेंसेशन के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करेगा, कंसेंट क्लाउज के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करेगा और रिहेबिलिटेशन मेजर्स के कंपोनेंट को भी इनकॉर्पोरेट करेगा. ये इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव भी है. Now balancing these with the industrial needs require transparent social impact assessment. और ये सिर्फ लिख देने से या फिर कहीं पर एक्सप्रेस कर देने से नहीं होगा. यू हैव टू जस्ट अप्लाई एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट बोथ इन द लेटर एंड स्पिरिट. So thereby this 2013 act introduced the concept like the social impact assessment. It also introduced the concept like the genuine community participations, livelihood restoration beyond the monetary payouts. क्योंकि monetary payout या फिर benefit is just one part of the entire process, right? So for the Jharkhand, you need to understand कि there shall be balance. यही model progressive होगा. So using this land bank, it will attract the industries and they generate the employment. Second, ensuring the acquisition comply with the 2013 Act, the provisions on the consent and rehabilitations. Third, prioritizing the sustainable development that respect tribal rights and the ecological concerns. Thus, the industrial growth must proceed with the social justice, inclusivity, ensuring that development benefits are shared equitably with the displaced communities. I was wondering,
सो थर्ड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बैलेंस आंसर्स लिखना है. इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चंस. नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज question number 2. What are the key differences between the shareholder centric and stakeholder centric model of the corporate governance? Right? In today's time, we are focusing on the corporate governance. Now, shareholder approach and stakeholder approach में difference है. Which one is the broad concept? It is the stakeholder approach, right? But what is the shareholder approach? It is more and more economic, that is called I centric. तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दैट इज कॉल्ड मनी मैक्सिमाइजेशन, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. It is the concept of the shareholder centric, but stakeholder includes the social, cultural, political, मतलब it is a broad concept. Now here the shareholder centric approach refers to prioritizing the maximizing shareholders wealth and returns on the investment, but the stakeholder centric balance interests of all the stakeholders like employees, customers, suppliers, community, environment alongside the shareholders. ठीक. डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डर्स किस पे फोकस करेगा? इट विल बी गाइडेड by the principle like profitability, dividend, market value, है ना? But stakeholder will focus with long-term sustainability, ethical practices, and the social responsibility. Now, if we talk about accountability aspect, shareholder that is mainly जो management है, the system है accountable to the shareholders, जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे. बट स्टेक होल्डर विल कंसर्न टू द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ब्रॉडर ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, सबके लिए कंसर्न होते हैं. रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो शेयर होल्डर सेंट्रिक इट फोकस ऑन फाइनेंशियल रिस्क एंड शॉर्ट टर्म गेन्स, बट स्टेक होल्डर विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिप्यूटेशनल रिस्क, इन्वायरमेंटल मीन्स ऑल एस्पेक्ट पे बात करेगा. ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करेंगे. शेयर होल्डर सेंट्रिक अप्रोच इट जनरली फॉलोड इन लेट्स से यूएस, यूके, दैट इज एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमीज, बट स्टेकहोल्डर अप्रोच जनरली फॉलोड इन एशियन इकोनॉमीज, द कॉन्टिनेंटल यूरोप, and emphasize on the collective welfare, right? So shareholder basically focus on profit maximization and stakeholder talk about the ethical governance की ज़्यादा बात करेगा. So the shareholder centric model emphasizes profit maximization. Stakeholder centric model stresses sustainable and inclusive growth. Modern corporate governance increasingly integrate both the aspect, recognizing long-term shareholder value depend on stakeholder trust and the social legitimacy. पॉइंट समझ में आ गया कि शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा. यदि समझ में नहीं आएगा प्लीज गो एंड रीड टू द हैंडआउट्स या फिर गो टू द वीडियोस जो भी हम लोगों ने क्लास करी है, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज ब्रीफली यू हैव टू डिस्कस अबाउट द आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. ठीक, तो जब भी कोई लिक्विडेशंस की बात आएगी तो दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इट प्रोवाइडेड फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स एनसीएलटी, National Company Law Appellate Tribunals NCLT, right? So there is called Debt Recovery Tribunals DRT. तो ये सारे provisions already discussed in the class. तो briefly discuss करना था. This is IBC 2016 is a landmark reforms in India industrial management aimed at resolving corporate insolvency in a time bound manner. कि insolvency का मतलब क्या होता है कि तरीके से wind up करना, है ना? That is called winding up. So this they recalled the Companies Act 2013. उसके बाद 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट लाया गया. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल, राइट? इंक्रीज द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस. नाउ यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू जो रिजॉल्व करना कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी इन ए टाइम बाउंड इन ए फेज मैन. इट प्रोवाइड यूनिफाइड framework for creditors and the debtors, replacing the fragmented laws and reducing the delays. जो delays होते थे उसको इसने दूर करने का काम करा. By ensuring the quicker resolutions or liquidation, IBC enhanced credit discipline, improve recovery rates for the bank, and restore investor confidence. Investor confidence को boost up करता है. For industries, it promote efficient resource allocation, reduces non-performing assets, and encourages entrepreneurship by offering a clear exit mechanism. Thus, IBC strengthened both financial stability and that industrial growth. For any economy, किसी भी country के लिए first thing is that is called ease of the doing business. ये अच्छा होना चाहिए. Now, यदि हम लोग overall economic size की बात करेंगे, so they contributions come from all the sectors that is called primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. But तो industrial sector में improvise करने के लिए because our economy, अब हमारी इकोनॉमी को लिफ्ट ऑफ करने के लिए which sector is stagnating? ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर.
सेकेंडरी सेक्टर इज वेरी, और इसके लिए इट रिक्वायर्स a huge investment, and investment के लिए you have to attract the investor and you have to create that India like an investment destinations. For that, each of the doing business आपका अच्छा होना चाहिए, condition of environment and investment आपका अच्छा होना चाहिए, the economy should have the return, the potential to return robustly, इसका potential होना चाहिए. So thereby one step is the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 to improve the ease of the doing business and as well as ease of governance in the country. So in this part, we have discussed the section number C, that is part C of your question paper. In later part, we will cover up the part B and part A sequence systematically, right? So I hope this discussion lecture, the answer session lecture, will going to help you. The answer paper, the PDF, will be sent to your the प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 ग्रुप्स, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. गो एंड रीड टू द हैंडआउट्स, मैच योर रिटन आंसर, कॉपी इवेल्युएशन हो रही है, आपकी कॉपी रिटर्न कर दी जाएगी. सो यू हैव ए, that is called the more and more checks and balances how to improve for the next examinations. So keep writing the answers, keep improving every Sunday, do not miss the test, and these tests are going to be the confidence building process as far as your project manager examination is concerned. So see you guys in the next class. We will discuss and take up the more questions in the next class. एंड फ्रॉम योर साइड आप भी अपने लेवल पे इसको तैयारी करिए, एंड जो भी फीडबैक मैकेनिज्म आपको एड ऑन करना है, यू मस्ट एड ऑन टू योर द नोटबुक, ताकि एवरी टाइम वेन एवर देयर इज अ टेस्ट एंड देयर विल बी डिस्कशन, यू वुड इम्प्रोवाइज द वन स्टेप अहेड इन योर द प्रिपरेशन लेवल. थैंक यू, जोहार, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट.